India wheat waiver, WTO demand is risk fraud. So WTO में there is an issue related to subsidy. Okay, like the India is providing the MSP, minimum support prices, to some of the crops. So there is a issue in the WTO under the peace clause that was ended in the 2004. कि country are not allowed to export those crops on which they are providing the subsidy to the country, to the peoples, like farmers को जो provide कर रहे हैं हम इन MSP के केसेस में हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं. तो बट देयर इज इशू विद द इंडिया कि इंडिया इज like they are saying कि we are providing in the form of like a market price. We are giving them the market price so that they can get the easy money, so they can be survive for a longer time. But we are not giving subsidy for like a half of the prices. If you see, we are providing the 1400 rupee for a 100 kg of the wheat. तो ये issue है अभी तक WTO में running है. जो 2004 में peace clause था जिसके according India is exempted from this condition, that is also ended in the 2004. But in a meeting in 2011 there was another clause is added. We can say कि like जो एक permanent peace clause नहीं add हुआ, but for a shorter time the peace clause was added under which the India can provide the subsidy to the farmers regarding the MSP. तो but the India stick on it कि हमें ये provide करना है for the longer run. So please add the clause in the WTO rules regarding it. If we are providing the subsidy to the farmers, so we are able to export to the like a food items to the other country. India give the example of the Indian Russian Ukraine war कि हमने सबसे ज्यादा wheat उस time पे provide कराया to these country. So if we are not allowed to export this type of the wheat which we are storing into the FCI, so how we can provide to those countries? So this is a logical issue that is keep in the table of the WTO. So regarding it, so this is the important one. So there is an important one, but is the peace clause in the WTO. Agreement on agriculture क्या है WTO पे? Different type of subsidies क्या है, क्या provide की जाती है? Like there is also issue into solar power panel between the USA and the India. तो ये डिस्प्यूट्स के बारे में कौन से क्लोज में कवर होता है वो आपको देखना होगा, और WTO में बेसिक्स तो क्या क्या WTO काम होता है वो आपको देखना होगा. ऑल्सो विच कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ द WTO. रिसेंटली द 2-3 कंट्री लेफ्ट द मेंबरशिप ऑफ द WTO, तो वो भी आपको एक नोटिफाई करना होगा. ठीक है, तो रिसेंटली द वन ऑफ द कार्डिनल डिमांड ऑफ द इंडिया इन द WTO rightly had permanent solution to issue of the public stock holdings of the food grains. तो जो इंडिया पब्लिक स्टॉक होल्डिंग्स करते हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू ऑफ द स्टॉक ग्रेन्स, they need to be added permanent clause into the WTO rules or WTO policy. So India public stock holding policy is based on the procuring food from the farmers at an administered price known as the minimum support price MSP. कौन इसको अलाउ करता है MSP को, कौन प्रोवाइड कराता है, किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू द सजेशन वाज गोइंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो ये चीजें याद रखनी है, कौन करता है. फाइनली जो अनाउंस होगा दैट विल बी अनाउंस थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट सजेशन विल गो थ्रू द CSCP. ठीक है. सो द PSS जो पॉलिसी है उसका मेन फंक्शन है कि हम एक रिम्यूनरेटिव प्राइस प्रोवाइड कराएं फार्मर्स को, कि जो उनका प्राइस लागत हुई है दैट शुड बी प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला. किस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं? हाँ, दे आर फॉलोइंग द 1.5 प्लस सम ऑफ द अदर कॉस्ट. तो उसको ये आपको छोटी छोटी चीजें याद रखनी पड़ेंगी कि इसके अकॉर्डिंग क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है. So providing the subsidized food to the underprivileged. So these are some of the conditions ki how you can provide the food to the underprivileged systems. Like there is many people living in the below poverty line in the country. So it's like a duty of the government to provide the food grains at a very cheaper price to those BPL families. So in that case, we need to store the food grains according to the minimum support price. So this is the issue in the India ki we are taking the food from the farmers at the supportive prices. So we can provide the food grains to the people in the country, those who are living below the poverty line. Also, we can export to the country those who are in the crisis of the food grains in the cases. So they want to add there is some specific clause related to the food policy into the WTO clauses. So ये इंडिया का इशू है स्पेसिफिक इन इट. तो यहाँ पे स्पेसिफिक टर्म्स है पीस क्लोज, कि पीस क्लोज में क्या है और एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर क्या है. तो WTO के लॉ के अकॉर्डिंग की प्राइस सपोर्ट बेस्ड प्रोक्योरमेंट अलाउ नहीं करता है. दिस इज अगेंस्ट द लाइक अ ब्रीच इज द WTO लॉ. दे आर नॉट सेइंग, WTO के लॉ कहते हैं कि इफ यू आर प्रोवाइडिंग सम सब्सिडी टू द फार्मर्स ऑन द एनी ऑफ द प्रोड्यूस, so you cannot export those produce to the any other country. It's the breach of the WTO law. Like they are giving an equal platform to the all the country for the providing of a trade. The trade आप सब बराबर हैं, all are equal for the trade. But if you follow through the subsidies, then how it's the equality will be there. Like the example of the China. China is exporting the most of the stuff to the all over the country in the world. So here the cases are given कि अगर आप ऐसा करेंगे तो this is against the WTO law. तो उस टाइम पे इंडिया ने अपना बताया कि वी आर डूइंग दिस फॉर दीज थिंग्स.
They also give the example of the India and Ukraine. अगर ऐसा नहीं होता तो how we can provide for this it. And also conditions कि India said कि we are only providing the 20% of the export of this type of the food grains. कि हम इस food grains only 20% ही हम export कर रहे हैं. That's not a major number for the world. This is also the given by the India to the WTO. So recent WTO ministerial meeting में यही हुआ था कि यहाँ पे price support के बारे में कुछ mention नहीं था. There recent तो meeting हुई है जेनेवा में, जेनेवा ministerial meets. The same thing is happened. यही discussion कई सालों से चलता हुआ है after the 2004. The peace clause is removed. So there is again the meeting regarding it. We need to add the things into the WTO peace clause कि हमें दोबारा से ऐड करना होगा so that कि there is no issue in the longer run. अभी है कि आपने permanently तो ऐड नहीं किया but the India is providing a subsidy for it. If you want to like it should be fixed for the other country as well, other developing country as well. It's not the specific case of the India also. Other developing country भी हैं जहाँ पे they can also do the same thing for the empowerment of the family who are living below the poverty. Those case में you need to be add the things there. So new dimensions में India insists that it should be also allowed to export food, most notably wheat from the pool of the food grain procured under the MSP. लेकिन WTO law prescribe country from exporting food grain procured at the subsidized price. ये बोलते हम नहीं करने देंगे, ये बोलते हमें करना है. So this is the issue in these things. लेकिन स्पेसिफिक उन्होंने बोला कि हम एग्रीमेंट्स के जो इश्यूज है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में इफ देयर इज अ स्पेसिफिक केस related to the war or the any other thing or any other food crisis in any of the country, we will allow to the some of the country which are having the higher food grain stock, they can export to those country in the specific conditions. तो ये open clause है, specific condition mentioned नहीं है, these are given specific condition we can allow to the country to export to the other countries. And also the peace clause, the clause refer to the article 13 of the agreement on the agriculture of the World Trade Organization. According to this, export subsidies and support measures given by a WTO member to its producer are considered legal under the agreement on the agriculture. If the India is providing a subsidy to the country, that is considered as the legal under the agreement on the agriculture. But in the 2004, the peace clause was removed from the WTO. तो उसके बाद they added this in the Bali conference, they added the temporary clause regarding it. तो permanent clause 2004 में खत्म हो गया. In the Bali conference in 2013, they added a temporary clause regarding to the providing the subsidy to the country in the WTO. So this was the question in 2017 related to the WTO. The WTO important that they can ask some of the other question also. To consider the following statements, India has ratified the trade facilitation agreement to the WTO. TFA is a part of the WTO Bali ministerial package of 2013. So this is also the important thing कि किस मीटिंग में क्या हुआ. You need to know the timelines कि recent में क्या मीटिंग हुई, उसका क्या conclusion निकला. 2-3 लाइन में उसका conclusion, मीटिंग टेबल बनाओ, उस टेबल में जितना भी WTO का अभी रिसेंटली मीट्स है उनको लिखो, उसमें क्या क्या हुआ है. And also TFA came into force in the January 2016. कब हुआ था पढ़िए. तो first and second statement is correct here, third is not correct here. So this type of the question can also be framed. And some of the other questions related to the WTO can also be asked, like related to the issue related to the solar panels. तो किसके अंदर what was the issue in that solar panel? क्यों India was against the US? क्योंकि there is some of the things in the WTO clause. You need to import some of the things related to the product which you are exporting to the other country. तो सोलर पैनल्स में इंडिया सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग करने लग गए थे बिकॉज वी टेक्नोलॉजी अडॉप्टेड फ्रॉम द यूएसए. सो देयर इज सम ऑफ द क्लोजेस देयर कि आपको यूएसए से इतना इंपोर्ट करना होगा. बट वी स्टार्टेड डेवलपिंग अवर सोलर पैनल्स. तो उस केस में यूएसए विन द केस इन द WTO रिगार्डिंग द सोलर पैनल्स. तो उस केस मैन्युफैक्चरिंग का इशू था कि लाइक मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग का इशू था कि दे स्टार्टिंग द मैन्युफैक्चरिंग द सोलर पैनल्स इन द कंट्री. हाँ, कस्टम भी बहुत बढ़ा दिया था. दैट्स द इशू विद द लोकल फॉर वोकल वाला इशू था कि हम लोकल को बढ़ा कर वहां से हम कम हो जाए. तो उसी केसेस में तो फेयर नहीं था. तो द यूएसए विन द केस इनटू द WTO. तो सिमिलर काइंड ऑफ द क्वेश्चन कैन आल्सो बी फ्रेम्ड देयर. WTO है क्या, कब बना, 1995 में. जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ है क्या, वो भी आपको पता होना चाहिए. गेट में क्या क्या कवर होता है, WTO में क्या है, कौन कौन से कंट्री मेंबर्स हैं. Almost all the countries are the member. 2-3 countries are not the member of the WTO. That you should know about which country are not the member of the WTO. So these are the maximum economic current affairs that can be asked in the examination. If you see, there are almost in each month 30-35 topics in the magazines related to the economy. So, but some of the repeated topics we can say WTO you find in the 12 months. हर month में WTO आ रहा है, हर month में IMF आ रहा है, हर मंथ में RBI रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, RBI ने इतना रेट कम कर दिया, इतना रेट ज्यादा कर दिया. तो आई स्किप दोस टॉपिक्स क्योंकि दैट्स आर रिक्वायर्ड कि एक क्लास में ही हम उनको फाइनली कवर करेंगे. व्हाट इज द डिसीजंस देयर. So in the third round I will try to cover those जो repeated है maximum times from the first one to last month. तो वो we will cover in those classes.